Hello students, let's start our today's EVS class. In this class we are going to start our chapter number 5, that is food for health. So student, you know that food is very important for us because food gives us energy. And because of only that energy we can capable to do any work. So let's proceed our chapter and we will discuss the different topics related food in this chapter. Hello students, let's start our today's EVS class. Today we are going to start our chapter number 5, that is food for health. So student, what is the meaning of food? Food is a material that is eaten by living things like man, animal, and food give us energy, and because of that energy we can capable to do work. It means that if we have to keep ourselves healthy, we need what? We need energy. All living things need energy to do work. Even energy is required for proper growth and repair also. So this energy we will get by food only, and then only we can keep our body healthy. क्योंकि अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. So that's why if we will take proper food in our diet, then only we can capable to keep our body healthy, because food is very essential for us. Food give us energy, and by the help of that energy we can keep our body healthy. In this chapter we are going to read about importance of food, nutrients in our diet, perfect health, changing food habits, food spoilage. So about all these topics we will discuss one by one. So let's start our chapter. So students, let's do this fill in the blanks by the help of these crosswords which is given on the screen. You also just see this crosswords, and let's do this fill in the blanks. Number 1, food keep us healthy. So just take your pencil and circle it, the spelling of healthy in the crossword. Next we have dash is a herbivorous animal. So herbivorous means what? Those animal which used to eat grass, only grass. So we have what? When we will search we will get cow. So you write cow and circle also cow. Next we have dash is the nutrient present in butter. अब butter में कौन सा nutrient होता है? तो butter में कौन सा nutrient होता है? fat होता है, ठीक है. और ये nutrient जो होता है it is present in food. That's why food give us energy. So fat is the nutrient present in butter. So you circle fat also. Next we have you should drink 7 to 8 glass of water daily. तो ये तो बहुत common है, आपको भी पता है कि हमें every day at least 7 to 8 glass of water we have to take, we have to drink. So you write water and circle in crossword water. Our next topic is importance of food. So student, you know that how food is essential for us. We need food to survive, because do you know why we can survive by taking food? Our body perform a number of functions, and for that functions our body need energy, and that energy we will get from food only. So that's why food is very important for us. So food, we need food to keep ourselves survive, to keep ourselves fit and healthy also. Food help us in different ways. So let's see that what are the different functions of food. Our food. So it is clear to you that food is very essential for us, and now let's see that what are the different functions. So first function is that it help us to grow, means food help us to grow. Grow का मतलब क्या होता है? बढ़ना. तो फूड क्या करती है?
Food provides us energy, and because of that energy our body grow. So food help us to growth of our body. Second, we have it gives us energy to perform different activities. So in our day to day life we are doing a number of activities like reading, writing, playing, walking, doing regular exercises. So all these activities it require energy, and that energy we will get from food. So ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम तभी कर पाएंगे, तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमारे शरीर में क्या होगी, एनर्जी होगी. It protects us from diseases and keep us healthy. So food play a very important role. Food protect our body from different type of diseases and make our body healthy. So food provide energy, and that energy make our bodies too much strong that we can capable to fight against diseases. Means our body can capable to fight against diseases, and our body become healthy. It helps in repairing wear and tear of tissues. So it means that wear and tear का मतलब होता है damage. So it helps in repairing wear and tear of our tissues. तो tissues they are the part of our body. Tissue जो है हमारे शरीर का हिस्सा है. So students, हमारी body जो है वो cell से बनी होती है. तो cell is the fundamental unit of our life. अब tissues किसको कहते हैं? तो a group of similar cells that perform a particular function form tissues. तो इतना तुम लोग जान लो कि टिश्यू जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा है. तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, ये डैमेज होते हैं और फिर दोबारा से नए बनते भी हैं. तो जो हमारे शरीर में टिश्यूज़ और सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एंड दैट एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम food. So really food is very very essential because it helps us to repair the worn out cells in our body. तो हमारे शरीर में जो सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं वो दोबारा से तभी बन पाएंगे जब हमारे शरीर में एनर्जी होगी. और दोबारा से ये सेल्स और टिश्यूज़ बन जाते हैं बिकॉज food give us energy. So that's why we have to take proper food in our diet. So this is the function of food. Without food we feel tired, weak and unhappy. So definitely अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम थक जाएंगे, हमें वीकनेस हो जाएगी, हम अनहैप्पी रहेंगे, मतलब कभी खुश नहीं रह पाएंगे. The food we eat acts like a fuel of our body and help us to various activity. Definitely, food is work like a fuel. अच्छा students, just tell me one thing. Can we run car without petrol? It is not possible. और पेट्रोल है क्या? पेट्रोल फूड है, यानी कार का जो फूड है वो क्या है? पेट्रोल है. तो पेट्रोल को हम फ्यूल कहते हैं, यानी विदाउट फ्यूल कार इट्स वेरी हार्ड टू रन. So same for our body, fuel is food. So fuel जो है हमारे बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है? फूड है. यानी हम अपने शरीर में फूड को जब इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ माउथ व्हेन इनटेक ऑफ फूड इज़ टेक प्लेस, जब हम खाना खाते हैं अपने मुंह के अंदर और वो शरीर में जाता है और फिर दैट फूड इज़ प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. तो बिल्कुल फूड एक फ्यूल की तरह है जो हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, वी नीड फूड टू सर्वाइव. डेफिनेटली इट इज़ ट्रू. फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. ट्रू. वी डू नॉट फील टायर्ड विदाउट फूड. इट इज़ ऑल्सो false. It is not true. Number 3 is false because we do not feel tired without food. ये गलत है. अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम थक जाएंगे, हम थका हुआ महसूस करेंगे. So students,
Let's start our next topic, that is nutrients in our diet. What is nutrients? Nutrients are substances that is present in food. Food consists of 5 main groups of nutrients. These nutrients are present in different food items in varying quantity. Okay, so food consists of 5 main group of nutrients. तो हमारे food में 5 मेन ग्रुप न्यूट्रिएंट्स के हैं. अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? We have to see them. Now these nutrients are present in different quantity in food items. So let's see that how these nutrients are divided into 5 groups. So see that nutrients are divided into 5 groups. First we have carbohydrates, second we have fats, then proteins, then vitamins, and then minerals. So we will start from carbohydrates. So carbohydrate is also known as energy giving food. So let's see that people doing more physical work need more carbohydrate in their diet. तो physical work means शारीरिक काम. तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होना चाहिए. इट मीन्स दैट more hard physical work require more carbohydrates in diet. Carbohydrates give heat and energy to our body. Okay, so carbohydrate is an energy giving food. It provides energy to our body. So inside our body, energy is burned to produce heat. It means that the food which we eat, it is converted in the form of glucose inside our body, and because of that glucose it is utilized by the different part of our body to produce energy. So in this way carbohydrates provide heat and energy to our body. Sugar and starch are two examples of carbohydrates. So sugar and starch. So sugar is a simple carbohydrate and starch is a complex carbohydrate, but both are example of carbohydrate. Example of food containing starch are rice, wheat and potato. Example of food containing sugar are grapes, sugar cane and banana. तो wheat, potato और rice they कंटेन स्टार्च. तो इनके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है. और शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स आर ग्रेप्स, शुगर केन मतलब गन्ना, एंड बनाना मीन्स केला. तो फ्रूट्स में शुगर होता है, नेचुरल शुगर वैसे भी फ्रूट्स के अंदर होता है. सो फ्रूट्स दे कंटेन शुगर, एंड स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर टू एग्जाम्पल ऑफ carbohydrates. So our next nutrient is fats. Fat provides twice as much energy as carbohydrates. Okay, so it means that fats provide double energy as compared to carbohydrate. यानी फैट से हमें 2 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से. मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में फ़ैट से हमें 2 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलता है. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लेटर यूज़. हमारे बॉडी में फ़ैट स्टोर हो जाता है ताकि फ्यूचर में जब भी बॉडी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बॉडी यूज़ करता है. सो द एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लेटर यूज़. फूड आइटम्स लाइक बटर, घी, नट्स एंड चीज़ कंटेन हाई क्वांटिटीज़ ऑफ फैट. तो बटर, घी, नट्स और चीज़ में हाई क्वांटिटी का फैट होता है, मतलब दे आर द मेन सोर्स ऑफ फैट्स. If the intake of fat is more in our diet, the extra fat gets stored in the body. This leads to a condition called obesity. So, okay, fat is good because fat provide us double energy as compared to carbohydrate. But if the intake of fat increases in our body, so what happen? It start accumulating inside our body. तो अगर हम ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं आवश्यकता से ज़्यादा,
अगर हमें ज़्यादा फैट अगर हम डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमें बहुत हार्ड फिज़िकल वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोई हार्ड फिज़िकल वर्क भी नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा फैट अपने डाइट में कंज्यूम करते हैं, so definitely it is not good because extra fat gets stored in the body and this condition is called obesity. So obesity is a disease which take place when extra amount of fat is accumulated inside our body. Obesity increases the risk of heart diseases and other health problems. तो अगर पर्सन ओबीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, उस पेशेंट या पर्सन के अंदर हार्ट के डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और भी हेल्थ इश्यूज उसके साथ हो जाएगी। सो इसलिए वी शुड टेक ओनली that much amount of fat which is required and essential for our body. So both carbohydrate and fats are known as energy giving food. So students, carbohydrates and fats, both we call them energy giving food because they provide energy to our body. Now take the person who needs more energy giving food items. So which picture just tell me, or just you have to tick that on which picture person need more energy giving food. So I told you previously, the person who is doing hard physical work, that person require more energy giving food. So you see that third picture, two players, it means two boxers are there and they are boxing with each other. So definitely boxing is a very hard physical work, it requires more energy. So we have to tick on third picture. So our next nutrients are proteins. So proteins are known as building blocks of the body. So no doubt protein build our body. प्रोटीन हमारे शरीर को तैयार करता है and almost all parts of our body is made up of protein. Blood, cells, tissues, all these are made up of protein. So no doubt proteins are the building blocks of our body. मतलब हमारे बॉडी को तैयार करने का मेन ब्लॉक्स है, बेसिक थिंग है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को तैयार करता है। सो इसलिए जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी डाइट में हम प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। क्यों? बिकॉज प्रोटीन बिल्ड देयर बॉडी, प्रोटीन मेक देयर मसल्स स्ट्रॉन्ग. So proteins are known as building blocks of the body. They help us to grow. So protein also help us in growth of our body. They repair our body after an injury or sickness. So protein also help us in repair our body after an injury. Injury का मतलब होता है चोट लगना और sickness या बीमारी. तो जब हम हमें जब चोट लगती है या फिर हम बीमार पड़ते हैं तो उस दौरान प्रोटीन क्या करती है, मतलब प्रोटीन इट इज़ अ न्यूट्रिएंट एंड इट हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी. जब हमें चोट लगने के बाद या जब हम बीमारी से धीरे धीरे ठीक होते हैं तो उस टाइम प्रोटीन्स हमारे बॉडी को रिपेयर करती है. Eggs, milk, fish, beans, meat, etc. are rich sources of protein. So these food items, that is egg, milk, fish, bean, meat, they are the rich source of protein. Now soybean also. Soybean contain too much protein. So you have to include soybean in your diet. Soybean is a good source of protein. Our next nutrient is vitamins. Vitamins help in maintaining good health. So vitamin it is responsible for good health. तो अच्छे हेल्थ के लिए विटामिन्स का हमारे डाइट में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है. They help in proper growth of our body. So vitamins also help in proper growth. हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से बढ़ने में विटामिन्स हेल्प करती है.
they are required in very small quantity by our body. Okay, so vitamins, they are required in very small amount. बहुत कम मात्रा में vitamins की ज़रूरत हमारे शरीर में होती है, but very small quantity of vitamin is very essential for proper functioning of our body. तो body proper तरीके से function करे, that's why they require a very small amount of vitamins. They improve the body ability to fight diseases. So vitamins, they help to make our body strong. That's why our body is capable to fight against diseases. तो विटामिन्स जो है हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है. So that's why vitamin is also called protective food, because it protect our body and make our body, it means it makes our body that it can capable to fight against diseases. So vitamins provide ability to our body to fight against diseases. Fruits and vegetables are rich sources of vitamins. So my dear students, always eat green leafy vegetables or vegetables. It means vegetables, it is a rich source of vitamin, and include fruits also in your diet. So these fruits and vegetables, they are the rich source of vitamins. So by eating these fruits and vegetables, you can improve the ability to fight against disease. So because and why? Because vitamins are present in fruits and vegetables, which help us to fight against diseases. Now students, just look at the screen and see different type of vegetables and fruits are given in the picture. So these food items, they contain vitamins. So we have to include these vegetables and fruits in our diet. So students, our next nutrient is minerals. Minerals are required in very small quantity. Okay, so just like vitamins, minerals are also required by our body in very small amount for its proper functioning. They keep us fit and healthy. So minerals, it also protect our body from diseases and keep our body fit and healthy. Minerals like calcium are used for building bones and teeth. Okay, so calcium is one of very important mineral, and calcium help bones and teeth to make strong. It means that calcium is used for building bones and teeth, यानी हमारे हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम क्या करता है, मजबूत बनाता है. Iron helps blood to carry oxygen to various part of our body. So iron is also one of the essential nutrient, and iron has ability to combine with blood and help blood to carry oxygen rich blood to various part of our body. Milk, leafy vegetables and fruits provide mineral to our body. So milk is also known as a complete food. So students, at least take a glass of milk in a day. Green leafy vegetables and fruits, so they are also very essential because they contain vitamins and minerals, and vitamins and minerals, they are protective food. So we have to make our body strong, then only our body can fight against different kind of diseases, and for that we have to include vitamins and minerals in our diet. You see that food containing minerals, milk contain minerals, so these things you have to include in your diet. Sunlight is a natural source of vitamin D. Yes student, जब आप सनलाइट में खड़े होते हो तो आपके शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. सो विटामिन सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी. Students, let's proceed our next topic, that is water.
Beside all these nutrients, our body also needs water and roughage. Okay, so the nutrients which we have completed, like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, these are very, very essential for our body. Beside these, water and roughage, they also play a very important role. So roughage means fiber. So those food item which contain fiber, we call that roughage containing food or fibers containing food. So let's see that what is the function of water and what is the function of roughage. So let's start with water. So water is very important for us, definitely student. Just like food, water is also one of our basic need, essential requirement. We cannot live without water. So let's see that what are the function of water. It helps to maintain our body temperature. Okay. So water regulate our body temperature. हमारे body temperature को water क्या करता है, maintain करता है और कभी भी हमारे body को overheat नहीं होने देता है. Very good example we have. Sweat is the main mean by which water prevent the human body overheating when the temperature outside it is very high. तो जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, वी फील वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल. बट व्हाट हैपन एट दैट टाइम, स्वेटिंग स्टार्ट, हमें बहुत पसीना होने लगता है. जब टेम्परेचर बाहर का बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट स्वेटिंग आवर बॉडी प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग. और ये सिर्फ वाटर के वजह से होता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल टू टेक 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे. तो हम जो पानी पीते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है. तो जैसे हमें पसीना होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, वी फील कूल. सो इन दिस वे our water helps to maintain our body temperature. It also help in digestion. Digestion is a process in which the food which we eat that is digested. तो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. तो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. स्टूडेंट्स, now our next topic is roughage or fiber. So the fiber is that part of the food that helps to keep a person healthy by moving food quickly through the body. Okay, so the food items which contain fiber is called fibrous food or we can also call a roughage. तो जो फाइबर होते हैं, जो हमारी बॉडी में फ़ाइबर होते हैं, वो फूड को हमारी बॉडी में क्विकली मूव करने में मदद करते हैं. यानी जैसे हम फूड खाते हैं तो वो ईज़िली से हमारे स्टोमक तक आता है एंड दैट फूड इज़ डाइजेस्टेड इन अ प्रॉपर वे टू गेट एनर्जी. सो इट मीन्स दैट रफेज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. क्योंकि क्विकली से अगर फूड बॉडी के अंदर आ जाएगा so definitely it helps in the process of digestion. Fiber is present in the peel of vegetables and fruits. Okay, so fiber is present. Peels का मतलब क्या होता है, छिलके. तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स में क्या होते हैं, छिलकों में क्या होते हैं, फाइबर होते हैं. इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. Okay, so the undigested food particle that is left after digestion, it is eliminated. It means that easily eliminated from the body by the help of fibers that is present in body. So in this way, roughage or fibers, they play a very important role in the digestion process. Means they help in
moving food quickly through the body. So it means that it help in the process of digestion, and it also help in the excretion of waste product also. So that's why roughage is very, very important. Students, let's see the picture, and this picture is food rich in roughage. So food rich in roughage, example we have grains, carrot, cabbage, turnip, cauliflower, strawberry, even apple and rice. They also contain fibers. So we have to include these food items in our diet. So students, our next topic is balanced diet, यानी संतुलित आहार. So what is balanced diet? A balanced diet is a diet which contain all the nutrients in proper amount, in right amount. ऐसा diet जिसमें हर तरह का nutrient balanced form में हो, right amount में हो. Okay, so let's see that a balanced diet is one which contain all the nutrients, water and roughage in the right proportion. तो ऐसा ये बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा डाइट जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट, वाटर और रफेज राइट प्रपोर्शन में हो, राइट अमाउंट में हो. अ बैलेंस डाइट कीप अ पर्सन फिट एंड हेल्दी. सो बैलेंस डाइट हम किसी भी पर्सन को स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा, उसको फिट रखेगा. द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द एज, amount of physical activities performed and environment. Okay, students, just note in your mind, balanced diet keeps a person fit and healthy, that is okay, but the diet of an individual depend on the age. तो किसी भी इंडिविजुअल का मतलब कि किसी भी आदमी का जो डाइट होता है वो उसके एज पे डिपेंड करता है. एज के हिसाब से वो अगर बच्चा है तो उसको कौन सी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए. अगर वो ओल्ड है तो उसकी एज के हिसाब से ही वो डाइट ले सकता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता है. एंड अमाउंट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, कि वो कौन से काम कर रहा है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या है, वो कितना शारीरिक काम कर रहा है और कितना मेहनत वाला काम कर रहा है, कौन सा वो वर्क कर रहा है, इस पे भी बैलेंस डाइट डिपेंड करता है. और इन्वायरमेंट के भी ऊपर कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल ईज़िली होती हैं, इस पे भी हमारा बैलेंस डाइट डिपेंड करता है. We should eat a balanced diet to keep our body healthy and fit. So really it is very, very important. So by keeping all the things in mind, that the diet of an individual, किसी भी आदमी का जो डाइट होगा वो उसके एज के ऊपर, उसके फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी जिस एरिया में रह रहा है वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे कौन से क्रॉप इजीली ग्रो हो सकते हैं. तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करता है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का डाइट. We should eat a balanced diet to keep our body healthy and fit. So by eating a proper balanced diet, by taking a proper balanced diet, we can keep our body healthy and fit. तो अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो इंक्लूड अ प्रॉपर डाइट इन योर शेड्यूल. तो अपने डेली का जो आप खाना खाते हो उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड करते हो, इट मस्ट बी इन बैलेंस्ड फॉर्म. तो आपका डाइट कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. Okay student, that's all for today's class. Now you have to learn and revise all these topics again and again. At least read the chapter 3 times, then all the things will be clear to you. If you have any doubt regarding any topic or any line, please you can call me or just you can also write in group. So complete all the exercises which we have
solved in video. So same you have to do in book also, and you have to send me in group. Now the half part of question and answers I will send you in the form of PDF, and that you have to complete in your EVS copy. Thanks for watching this video.